The tussle that is taking place between the doctors and Mamata Banerjee is still continuing. Agitating junior doctors on Thursday refused to hold talks with the Bengal government to resolve the RG car impasse unless their demand for the live streaming of meeting was met. In fact, Chief Minister Mamata Banerjee waited for more than an hour just to meet the agitating junior doctors. The doctors simply refused to meet her. In her statement, West Bengal Chief Minister offered to resign for the sake of justice. She claimed that people do not want justice. In fact, they want her chair. She further apologized for the stalemate. She has requested doctors to comply with the Supreme Court order and to resume work. She also claimed that 27 patients so far have lost their lives due to the lack of medical services in government hospitals across the state of West Bengal. The Bengal governor also lashed out at the Chief Minister, declaring that he will socially boycott her. The TMC hit back. They are saying CV Ananda Bose's remarks are politically motivated. On the other side, Bharatiya Janata Party is making this a little political. They also mocked Mamata Banerjee and said that she should resign from her chair. मुख्यमंत्री सुरक्षा करने के बजाय विरोध कर रहे हैं। बंगाल की लेडी मैकबेथ में संकल्प लेता हूं कि मैं मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्करण करूंगा। सामाजिक बहिष्करण, सोशल बॉयकॉट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सामाजिक बहिष्करण का मतलब क्या है? मैं मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा। मैं किसी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हो। অন্যতম কন্ডিশন ছিল হচ্ছে যে এই বৈঠককে লাইভ স্ট্রিমিং করতে হবে এবং এই দাবি অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কখন কি বলেন কোনো গ্যারান্টি নেই। উনি হয়তো মঞ্চে ঘরের ভেতরে এক কথা বলে মঞ্চে এসে অন্য কথা বলতে পারেন। প্রথম দিন যখন মেল করা হয়েছে উনি পরে বলছেন যে আমি অপেক্ষা করছিলাম, উনি নাকি অপেক্ষা করছিলেন জুনিয়র ডাক্তারদের জন্য, অথচ মেলে বা চিঠিতে কোথাও উল্লেখ নেই যে মুখ্যমন্ত্রী সেই বৈঠকে থাকবেন। डिजिटल इंडिया के तहत देश में कोर्ट सिस्टम पहुंचाने के लिए सब कोई सुप्रीम कोर्ट के लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं और चाहे तो हाई कोर्ट के भी देख सकते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर ममता बनर्जी को इतना ही डर है कि वो स्टूडेंट को बीजेपी स्टूडेंट्स जो आंदोलन कर रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे और क्या बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, उनके बल पकड़े जाएंगे, तो उससे बचने के लिए उन्होंने एक्चुअली अवॉइड किया। हम लोगों ने उनको समझाने की पूरी कोशिश की है, उनसे बार बार बात की है, उनको समझाया है कि मीटिंग में क्या क्या व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की है जिससे कि पूरा प्रोसीडिंग्स अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट हो। कोई भी जो ट्रस्ट होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, हम लोग आपस में एक दो, वी आर नॉट पोल्स अपार्ट, हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है। इसके लिए हमारा कोई दो मत नहीं है। हम उनको सुनना चाहते हैं कि वो और क्या चाहते हैं जिससे कि हम इसको और उन्नति की तरफ ले जा सकें। डॉक्टर को अब स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, हाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात हुई है कि पहले राज्य सरकार के ऊपर विश्वास नहीं था, यह लग रहा था कि कोलैबोरेशन हुआ है, सही जांच नहीं होगी। जब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है तो सीबीआई तो केंद्र की है। मैं जानता हूं कि ममता जी बड़ी नाटकीय लीडर है, वो इस्तीफा देने वाली नहीं है, वो नाटक करेंगी। My colleague Suryagini Roy is now joining me. Suryagini, very clearly we can see that the impasse is not ending because the junior doctors, very, very clear, they have specific demands. They want Mamata Banerjee to agree on all the demands, specifically to agree that if there is a meeting, it will be live broadcast. Well, the long and short of the story that we saw yesterday was that the meeting didn't happen. Despite both the sides claiming that they both were looking for the meeting, looking forward to the meeting. But what we saw last evening, it was clear that it didn't happen. And the reason behind it was, live streaming not being allowed. There were three basic, demands that the doctors had stated from their end for this meeting to start. Firstly was that the Chief Minister has to be present. Secondly, that a delegation of 30 should have been allowed. And third one was that a live streaming should have been allowed. Now, the first two were met. More than 30 doctors were allowed. Their names were also taken. But the state government, precisely Mamata Banerjee, was of the opinion that because this was a matter which was pretty sub judice and
that was the reason why she couldn't allow the live streaming to happen. However, the doctors were of the opinion that, if administrative meetings could have happened on live streaming, what was why couldn't such kind of a meeting happen in a live stream manner? They had their reasons. They say that, there are hundreds of doctors, hundreds of junior doctors who are sitting on dharna. They wanted, even they can't practically come and attend the meeting. So these people could see what was happening, what was happening in real time. So these were the issues that both Right. the sides flagged off. However, as I mentioned, and as you mentioned, Aishwarya, the deadlock still continues. The doctors are on dharna, and Mamata Banerjee has clearly stated that live streaming would not be allowed. So that meeting didn't Right. happen. Now let's see what happens today. Back to you. Thank you, Suragini, for giving us all those details and putting things in perspective.